ऑल राइट गाइज, तो चलो इस वीडियो में ना लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन लिसनिंग टेस्ट। पूरा टेस्ट सॉल्व नहीं करेंगे, एक कोई सेक्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने बुक ओपन करी है कैम्ब्रिज आइल्स नंबर 6, जस्ट रैंडमली उठाई मैंने एक, तो आई हैड सम टाइम सो आई थॉट ऑफ जस्ट मेकिंग वन वीडियो। ठीक है, तो कैम्ब्रिज आइल्स 6 बुक है एंड पहला ही टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं। मैंने किया तो है नहीं ये वाला सॉल्व पहले, ना ही मैंने किसी अपने सेशन में कराया है। तो ये सेक्शन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। मे बी इन अदर वीडियो विल सॉल्व MCQ और अदर क्वेश्चंस अदर टाइप। ठीक है, तो ये फर्स्ट ही करते हैं, बट ये सिंपल सा लग रहा है। इट्स वेरी सिंपल, इसमें मैं कुछ समझा नहीं पाऊँगा आपको। इट्स वेरी सिंपल। इट हैज़ टू फिलिंग द ब्लैंक्स जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, बट अगेन इट्स नॉट गोना वर्क हियर। ओके, तो अभी ठीक है, चलो सेक्शन 4 कर लेते हैं। ठीक है, अभी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। अगेन ग्रेट, इट हैज़ दीज चॉइस क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, तो ओके लेट्स स्टार्ट। लेट मी जस्ट गेट द ऑडियो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन सॉल्व अलॉन्ग विद मी। इट्स कैम्ब्रिज बुक नंबर 6, टेस्ट नंबर 1, सेक्शन नंबर 4। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। लेट मी जस्ट गेट द ऑडियो एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, चलो नाउ आई विल स्टार्ट द ऑडियो। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व विद मी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ एग्जामिनर इज़ ट्राइंग टू ट्रिक स्टूडेंट्स। आई होप एक दो क्वेश्चन में तो उसने ट्रिक किया होगा, बट लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता, विल सी दैट। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। Now turn to section 4. Section 4. You will hear a talk on a social history of the East End of London. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In the last few weeks, we've been looking at various aspects of the social history of London. And this morning, we're continuing with a look at life in the area called the East End. I'll start with a brief history of the district and then focus on life in the first half of the 20th century. Back in the 1st to the 4th centuries AD, when the Romans controlled England, London grew into a town of 45,000 people, and what's now the East End, the area by the River Thames and along the road heading north-east from London to the coast, consisted of farmland with crops and livestock, which helped to feed that population. The Romans left in 410, at the beginning of the 5th century, and from then onwards, the country suffered a series of invasions by tribes from present-day Germany and Denmark, the Angles, Saxons and Jutes, many of whom settled in the East End. The technology they introduced meant that metal and leather goods were produced there for the first time. And as the East End was by the river, ships could transport goods between there and foreign markets. In the 11th century, in 1066 to be precise, the Normans conquered England. And during the next few centuries, London became one of the most powerful and prosperous cities in Europe. The East End benefited from this. And because there were fewer restrictions there than in the city itself, plenty of newcomers settled there from abroad, bringing their skills as workers, merchants or moneylenders during the next few hundred years. In the 16th century, the first dock was dug, where ships were constructed, eventually making the East End the focus of massive international trade. And in the late 16th century, when much of the rest of England was suffering economically, a lot of agricultural workers came to the East End to look for alternative work. In the 17th century, the East End was still a series of separate, semi-rural settlements.
there was a shortage of accommodation, so marshland was drained and built on to house the large numbers of people now living there. By the 19th century, London was the busiest port in the world, and this became the main source of employment in the East End. Those who could afford to live in more pleasant surroundings moved out, and the area became one where the vast majority of people lived in extreme poverty and suffered from appalling sanitary conditions. That brief outline takes us to the beginning of the 20th century, and now we'll turn to housing. At the beginning of the century, living conditions for the majority of working people in East London were very basic indeed. Houses were crowded closely together and usually very badly built because there was no regulation. But the poor and needy were attracted by the possibility of work, and they had to be housed. It was the availability rather than the condition of the housing that was the major concern for tenants and landlords alike. Few houses had electricity at this time, so other sources of power were used, like coal for the fires which heated perhaps just one room. Of course, the smoke from these contributed a great deal to the air pollution for which London used to be famous. A tiny, damp, unhealthy house like this might well be occupied by 2 full families, possibly including several children, grandparents, aunts and uncles. Now, before I go on to health implications of this way of life, I'll say something about food and nutrition. That is the end of section 4. Alright, You so now let have me just half a pause minute the audio. to check your answers. Okay, so that was on the slightly on the tougher side. Okay, तो मुझे भी नहीं sure है, I'm not sure. मैंने ये C select तो किया है. He was talking something about heat and all, but I could not get other options, so I had to go with this unclear, heating problems. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे I'm just bit confused. कहीं पे I just सुना था मैंने he talked about England, so I'm not sure about this. So let me just check my answers and then I'll get back to you guys, and then we will see the transcript also and देखते हैं इसमें क्या tricks use कर रहा है examiner. But if you know my rules, listening rules and listening formulas and all the tricks that examiner uses, so if you know all these things, then I think it's gonna be very easy for you, and I'm sure जब आंसर देखेंगे then also will get to know कि सारे वो listening rules and formula में ही cover हो जाएगा. That I'm pretty sure. But okay, let me just see the answers and then I'll meet you. Alright, so we have got all correct. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, I'll show you the transcript also. ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट रफली चेक किए हैं. ट्रांसक्रिप्ट में वी विल सी इन डिटेल कि ये आंसर तक कैसे पहुंचे हम लोग. ठीक है, तो जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल जस्ट गेट द ट्रांसक्रिप्ट एंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट रेडी. ऑलराइट, सो हियर वी आर. ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है एंड दीज आर ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, तो चेक करते हैं एक बार. पहला था फीड, इसमें मैंने कवर नहीं किया है क्या? Series of okay, so I just missed this part and I think it was very simple, so that was pretty straightforward. ठीक है, तो second था metal and leather, तो that was also pretty straightforward. He talked about the goods. अब इसको देखो, ये अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे listening rule कौन सा यूज़ आ रहा है? Words reorder. ठीक है, अब goods उसने बाद में बोला है after telling about these answers, right? Metal and leather, उसके बाद उसने यूज़ किया goods. But if you see here, then goods was used before these two statements. So you need to make sure कि आपको words reordering के बारे में पता है, right? And then okay, so we'll see, we have seen this 11th century and here also it was, I think, very simple, fewer restrictions. So rule number 2, that is rule number 2, what's that? Synonym language. Okay, very simple, lack, fewer, so that was easier one. ठीक है, उसके बाद I think this is again, so you see construction of facilities. Now it says about first dock was dug, ships were constructed, again words reordering. Rule number 1,
ठीक है, अब इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज था, बट सी समवेयर आई हर्ड अबाउट दिस इंग्लैंड. अब ये देखो, एग्रीकल्चर वर्कर्स केम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड टू लुक फॉर वर्क. So here you see much of rest of the England was suffering from economically. A lot of agriculture workers came to East India to look for alternative work. ठीक है, तो इसमें भी you have got this one of the listening rules. ठीक है, and here also ये भी easy था, simpler one, built on, was built on. ठीक है, यहाँ से मैंने क्रैक किया था इसको, बट आई थिंक इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स एज वेल, दैट कुड बी प्रोवाइड रेंट टू प्रोवाइड लैंड, शॉर्टेज ऑफ एकोमोडेशन. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे सी मार्शलैंड वॉज ड्रेन्ड. ठीक है, मार्शल्स वर ड्रेन्ड. सो सिंपलर वन. ठीक है, तो ये थे हमारे फिलिंग दी ब्लैंक्स, राइट. एंड अभी फटाफट चेक कर लेते हैं हम लोग ये वाले. अभी देखो, इसमें हाउसेज वर क्राउडेड क्लोजली टुगेदर एंड यूजुअली वेरी बैडली बिल्ट. तो यहाँ पे ना मैंने ओवर क्राउडिंग कर दिया था, बट आई वाज़न्ट श्योर, तो मैंने पुअर स्टैंडर्ड ऑफ बिल्डिंग कर दिया था. ठीक है, तो उसमें फिर ये आई वॉज, यहाँ पे देखो उसने बाद में फिर से ये बात किया था, अनहेल्दी हाउस लाइक दिस माइट वेल बी ऑक्यूपाइड बाय 2 full families पॉसिबली इंक्लूडिंग सेवरल चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड अंकल्स. ठीक है, तो अनहेल्दी हाउस को यहाँ से मैच करना था, बट मैंने उसको पहले ही यहाँ से एंटिसिपेट कर लिया था, विच वॉज रॉन्ग. बट एट द एंड जब उसने इसके बारे में बात की, देन आई वाज प्रीटी श्योर, बिकॉज आई वाज जस्ट, आंसर तो फाइंड करने होते हैं ना, तो इस मैचिंग वाले केस में यू हैव टू मेक श्योर कि बाकी जो ऑप्शन है ना उसको भी कट आउट करते जाओ. जैसे उसने लैंड रोड के बारे में अनसिम्पथेटिक नहीं बोला था, उसने यूज सम अदर वर्ड, सो आई जस्ट क्रॉस इट आउट. वाटर के बारे में कुछ ज़्यादा उसने बोला नहीं. तो अब हीटिंग प्रॉब्लम्स कहाँ से मुझे पता चला, देखो इसमें इसने यहाँ से यहाँ, ये आई वाज़न्ट श्योर अबाउट दिस, बट इट इवेंचुअली आई वाज राइट. सो यू सी few houses had electricity at this time, so other sources of power were used like coal for fires which heated perhaps just one room. ठीक है, तो इसको I call this advance paraphrasing, या चलो छोड़ो advance no related term match rule. अभी हर क्वेश्चन में कोई ना कोई रूल यूज़ हो रहा है, बट जस्ट मैं आपको फ्यू जो ऑप्शंस है उसमें बता रहा हूँ, फ्यू क्वेश्चंस में बता रहा हूँ कौन कौन सा रूल यूज़ हो रहा है. बिकॉज अगर मैं इसको थोड़ा और कंटेम्पलेट करूँ, ठीक है, थोड़ी और टाइम लगाऊँ इस पर, तो आई गेट टू नो कि सारे जितने भी आंसर्स हैं ना, कुछ ना कोई रूल यूज़ हो. अब जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थ्रू दिस वीडियो. अब इसमें नो रिलेटेड टर्म मैच रूल यूज़ हुआ है. दैट मीन्स कि अभी इसको मैं कौन से एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ आपको. देखो, नो रिलेटेड टर्म मैच में क्या होता है ना, दो टर्म्स हैं 1 and 2, सो बोथ हैव सिमिलर मीनिंग, ठीक है, बट नॉट द एग्जैक्ट सेम मीनिंग. So let's say if we have Virat Kohli is the only player in the team who scored a century today. So that's one statement. Virat Kohli is the only player in the team who scored a century today. ठीक है, विराट कोहली इज़ द ओनली प्लेयर इन द टीम हु स्कोर्ड अ सेंचुरी टुडे. दैट्स स्टेटमेंट नंबर 1. अब स्टेटमेंट नंबर 2, जस्ट टेल मी इज इट राइट और रॉन्ग, ठीक है, ट्रू और फॉल्स. रोहित शर्मा स्कोर्ड 60 रन्स. अभी यू डू नॉट नो, कुछ आपके सामने देयर इज़ नो स्कोर कार्ड, नथिंग इज़ देयर. आई जस्ट गेव यू वन स्टेटमेंट, विराट कोहली इज़ द ओनली प्लेयर इन द टीम हु स्कोर्ड 100 रन्स, ठीक है, हु स्कोर्ड अ सेंचुरी. ठीक है, नाउ इफ़ आई से रोहित शर्मा स्कोर्ड 60 रन्स, right, so that means that's a true statement because Virat Kohli is the only player who scored more than 100 runs. So it's not कि आपको numbers पे जाना है कि you cannot say he scored 60 or 65. just I am trying to explain you this thing कि देखो दोनों terms में कोई match नहीं है, but still you are able to figure out, you are able to understand कि हाँ विराट कोहली ने अगर सेंचुरी मारी, that means all other 10 players in the team would have scored less than 100 runs. So Rohit Sharma is one of them and he scored 60 runs. So it's like related term match, and it's not no related term match, it's a related term match. And yeah, so अगर आप यहाँ पे देखोगे, fewer houses had electricity at this time, so other sources of power were used like coal for the fires which heated perhaps just one room. So that clearly means it this room had heating problems, right? Yeah, so
दैट्स हाउ यू सॉल्व. मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको समझाया है. मे बी इन सम अदर वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि कैसे कैसे यू नो ऑल दीज लिसनिंग रूल्स यू हैव टू इम्प्लीमेंट विच आई टीच इन माई कोर्स. And we will see some more problem statements, reading questions, writing questions. So whenever I'll get time, जैसे आज मुझे कुछ time मिला था, तो I thought of just solve one statement for you guys so that you can also learn कि कैसे we have to solve listening questions. And of course I choose this one fourth because students के लिए काफ़ी difficult होता है. So I hope you have got the idea. But just one thing more, always highlight keywords in your listening test. So you might have done 2-3 mistakes in this part, in this section, right? If you guys have solved with me, तो हो सकता है you would have made 2-3 mistakes, but make sure you have to highlight keywords. So that's how I could connect my keywords with the audio and I was able to give all correct answers. Right, so that's it from this video. We will see something else in our next video.